Hello, children. Good morning, and a very warm welcome to your English class. I am Snigdha, your English teacher, and I want to welcome you all to the Kamal family. All of you are new here, so we welcome you with open hearts. Now, children, since today is the first class, so first of all, I would like to give you a few instructions regarding the classes, regarding the English lecture. Okay, the book work, the copy work, the book, the copy, everything. Okay, so you will have two books. One will be of English grammar and the other one of English literature. The name of the English grammar book is Elementary English Grammar and Composition for class 6 by N.K. Agarwala. Okay, and the second one is the Gulmohar book, the Gulmohar 9th edition book for class 6. Okay, so those who have not got your books, kindly get them. Okay, go to the shops and get them. Take proper precautions while going to the shops. Now, last year also, from whichever school you all must have come, you all must have gone through the online classes, the online videos. This year we were expecting to meet the children, but since COVID is still there and we are still in lockdown, so we have to meet each other virtually, right? So I hope that I will get your cooperation and we will go through these classes, these online classes, very smoothly. Okay, I will be teaching you in both mediums, English and Hindi. ऑल्दो द सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इंग्लिश के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो एक्सप्लेनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, दोनों में मिला के होगा. ओके, द एक्सप्लेनेशन विल बी इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, सो ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो. ठीक है, देन अदर देन दैट, वेन एवर द वीडियो इज सेंड, it is advised that you all read the instructions very carefully that are given in the video or along with the video. वीडियो के साथ जो instructions दी गई हैं या फिर वीडियो में जो instructions दी गई हैं उन्हें ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा. ठीक है. The third thing is, while teaching literature, I will give you the instructions for literature. Today we will start with grammar, the very first chapter, and it is the easiest chapter. आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, the sentence. We will start that today. So before that, I want to tell you something. If you do not understand any meaning, अगर मैं समझा रही हूँ आप लोग को कोई meaning ऐसा फंस गया जो नहीं समझ आ रहा है, then आप लोग उस मीनिंग को डिक्शनरी में देखेंगे. ठीक है, यू ऑल विल सी दैट मीनिंग इन द डिक्शनरी. ओके, other than that, if you do not have a dictionary or if you are not unable to concern the dictionary, then all of you know how to use the mobile, right? internet use करना सबको आता है. You all can check the meanings in the on Google. Okay, सो डिक्शनरी में देखने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप एक मीनिंग ढूंढते हो तो आपको 4 या 5 मीनिंग्स एक साथ नज़र पड़ जाती हैं एंड यू कम टू नो 4 to 5 वर्ड्स इंस्टेड ऑफ नोइंग 1 वर्ड. ओके, और गूगल पे देखने का ये फ़ायदा होता है दैट यू विल गेट द हिंदी वर्ड, द सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एवरीथिंग ऑफ दैट मीनिंग. ओके, सो जहाँ भी मीनिंग ना समझ में आए, कंसर्न अ डिक्शनरी और कंसल्ट अ डिक्शनरी और गूगल. ओके, देन अनदर थिंग, जो बुक और कॉपी का वर्क होगा, जो भी एक्सरसाइजेज होंगे, वो सारे मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगी. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन एंड देन आई विल सॉल्व इट एंड देन सेंड द PDF टू यू ऑल ऑफ द बुक वर्क एंड द कॉपी वर्क ऑफ द एक्सरसाइजेज. ओके, सो जो भी बुक, जिन भी एक्सरसाइजेज पे बुक वर्क लिखा होगा, यू हैव टू डू देम इन द बुक, एंड जो भी एक्सरसाइजेज पे कॉपी वर्क लिखा होगा, यू हैव टू डू दोज एक्सरसाइजेज इन द कॉपी. एग्जाम में डेफिनेशंस भी आएंगे. ओके, एंड अनदर थिंग, यू हैव टू यूज 2 पेन्स इन फॉर योर वर्क. इन योर कॉपी यू हैव टू यूज़ अ ब्लू एंड अ ब्लैक जेल पेन. ठीक है, जेल पेन से लिखना है और ऐसे जेल पेन से लिखना है जिसकी प्रिंट पीछे वाले पेज पे ना पड़ जाए. सम ऑफ यू यूज़ वेरी डार्क पेन्स. ओके, सो थोड़े ऐसे पेन से लिखना जिससे पीछे वाले पेज पे प्रिंट ना पड़े. ओके, other than that, you have to do your book work with the pencil and copy work with pen. Okay, questions you will write in black pen and answers you will write in blue pen. I hope I have given all the instructions. Other than that, one thing that I forgot to tell, that you will make 2 copies for English literature and 1 for English grammar. Okay.
When I will send you the PDF, I will make sure that I write all the answers. Okay, मैं सारे answers लिख के भेजूंगी, लेकिन जो questions होंगे वो आपको book से लिखने होंगे, ठीक है? I will not write the questions. I will write only the answers along with the exercise number. Exercise 1 के answers, then exercise 2 answers, exercise 3 answers, that way. Okay. And some exercises I will be solving in the book itself. I will send you the picture. It will be very clear to you all. Another thing, children, do your copy work very neatly. I want you all to do your copy work very neatly. जैसे मैं PDF भेजूंगी एकदम neat and clean, आप लोग को भी अपना copy work वैसे ही करना है एकदम neatly. There should be no overwriting. Avoid using whiteners and ink erasers. कोशिश करना कम गलतियाँ हों. As simple as that. काम neat होगा अपने आप, ठीक है? Be attentive while doing your work so that the work that you do is neat, the outcome is neat. So when you all will send the copies to us for checking, जब भी भेजोगे तब आप लोग के साथ ये रहेगा कि it will be easier for us to check and there will be lesser red marks in your copy. You will like it. And जिसकी कॉपी अनटाइडी होगी उसको गुड भी नहीं मिलेगा, बाकी बच्चों को तो गुड मिलेगा, है ना? Okay, so children, that was all for your instructions. Now in the next video I will send you the first chapter of your English grammar book, that is the sentence. Okay, we will start with the sentence. Okay, so I will explain it to you and I will send you the PDF also. Take care, students. Read this group of words, children. Took us father the to park. Bought market I vegetables from the. Going to party is she tonight. Now, do these group of words make sense? No, right? They do not make sense. Now, rearranging the group of words as father took us to the park. I bought vegetables from the market. She is going to a party tonight. Now these group of words make sense and so they can be called sentences. Okay? So what is a sentence? A sentence is a combination of words arranged in such an order that it expresses a complete sense or meaning. Here it के बाद is गलती से लिखा हुआ है. आप isn't required in that place. Okay, so a sentence is a combination of words arranged in such an order that it expresses a complete sense or meaning. Words को एक proper order में arrange करना such that the group of words start making sense, complete sense बने उससे, तो उसे हम sentence कहते हैं. Okay? Now comes the difference between phrases and sentences. What is a phrase and what is a sentence? Okay? For example, if I say on the table, ठीक है, या in the air, these are phrases. इसके साथ अगर हम सेंटेंस जोड़ते हैं तो कैसे बनेगा? The books are kept on the table. Birds fly in the air. ठीक है, तो on the table क्या था? फ्रेज था, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स था जिससे सेंस तो बन रही थी, जिससे सेंस तो आ रहा था कुछ, लेकिन इट डिड नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर. टेबल के ऊपर क्या? टेबल के ऊपर कब? कोई भी सेंस नहीं बन रहा था, सिर्फ इतना पता चल रहा था टेबल के ऊपर. It gives you limited sense but not complete sense. Similarly, in the air also. But when I say the books are kept on the table, it makes complete sense. It gives a complete idea. एक complete idea बनाता है कि on the table के बारे में क्या बोला जा रहा है. Okay? So a phrase is a group of words that does not convey a complete thought. As phrases do not express a complete idea, they can't stand alone. फ्रेज में कंप्लीट आइडिया तो होता नहीं है, तो उसको अगर हम सिर्फ अकेले में यूज करते हैं, ऑन द टेबल लिख के छोड़ दें, तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा. They can only be used as parts of sentences. They do not begin with a capital letter and do not have a full stop at the end.
अब फ्रेजेस चूंकि कंप्लीट सेंस तो बनाते नहीं है, सेंटेंसेस है नहीं, तो फ्रेजेस को कभी भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते और फुल स्टॉप से एंड नहीं करते, जबकि सेंटेंसेस में क्या होता है, दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ full stop. Okay, a sentence refers to a group of words that expresses a complete thought. A sentence necessarily contains a subject and a verb. अब फ्रेज में ज़रूरी नहीं है कि कोई सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, ठीक है, बट सेंटेंसेस विल ऑलवेज कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. They begin with a capital letter and have a full stop at the end, as I have already told you. Okay, now there are 4 types of sentences. This we have already studied in class 6th, isn't it, children? The first one is declarative sentence, the second one is interrogative sentence, the third one is exclamatory sentence, and the fourth one is imperative sentence. Okay, so what is a declarative sentence, children? Do you remember? Declarative sentence को assertive sentence भी बोलते हैं and it expresses a statement. Sentences that express a statement is called declarative sentence. A sentence that expresses a statement is called a declarative sentence. कोई भी चीज़ जब डिक्लेयर की जाती है उसे declarative sentence कहते हैं. सिंपल जो statements होते हैं उन्हें हम declarative sentence कहते हैं. For example, I have a basketball game tonight. I just finished reading that book. Interrogative sentence जो interrogate करता है, which has a question in it. Will you come to my game? Have you ever read this book? Exclamatory sentence. Exclamatory sentence always has an exclamation mark at the end. What is an exclamatory sentence? It expresses a sudden emotion or a sudden feeling, okay, of joy or sadness, okay. We won the game. This is the best book I have ever read, okay. Then imperative sentence. Imperative sentence क्या होते हैं? Imperative sentence वो sentences होते हैं जिनके थ्रू कोई कमांड या कोई रिक्वेस्ट या विश या डिजायर ऐसी कोई चीज हमें मिलती है, ओके. सो फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कम एंड वॉच मी प्ले. इट इज अ रिक्वेस्ट. रीड दिस अमेजिंग बुक, ओके. नाउ here are some examples of declarative sentences. George brushes her teeth twice a day. Okay, this is a simple statement, so it is a declarative sentence. They should take your umbrella because it's raining. Now this is also a statement. If water reaches 100 degrees, it boils. This is also a statement, a simple statement. Mother cut the cheese with a knife. When he was young, his father died. Now, all these sentences, children, are mere statements. ठीक है, सिर्फ statements हैं. ठीक, तो assertive sentence या declarative sentence क्या होते हैं? Sentences which tell us about, not tell us about, sentences which show that the sentence is a statement. ठीक है, वो होते हैं हमारे declarative sentence या assertive sentences, okay. A sentence that states or declares something is called an assertive sentence, okay. After this comes, children, interrogative sentences. What are interrogative sentences? Interrogative sentences are such sentences which ask a question. When the order of words in a statement is changed in a certain way, then the statement becomes a question. ठीक है? For example, if I say, you were late yesterday. ठीक है? This is a statement. This is a declarative sentence. You were late yesterday. Okay. Now, if I replace the verb and the subject, it will become, were you late yesterday? Now, this becomes a question. Okay. Similarly, you have done your question. Have you done your question? Okay, the first one was a declarative sentence and the second one has become an interrogative sentence. So a sentence that asks a question is called an
interrogative sentence. Okay, for example, what is the right way to iron a shirt? When are the best days to go to the mall? Where is your new cat? Why is the sky blue? Whose socks are these? Were you too late? Would you like cookies or a banana for dessert? After this, children, exclamatory sentence. What is an exclamatory sentence? A sentence that expresses some strong or sudden feeling is called an exclamatory sentence. ठीक है, कोई भी strong या sudden feeling या emotion जो sentence से express होती है उसे हम exclamatory sentence कहते हैं. And an exclamatory sentence always ends in an exclamation mark. An exclamatory sentence or exclamation is a more forceful version of a declarative sentence. Declarative sentence में जैसे एक sentence होता है, simple statement होता है, exclamatory sentence can be said as a more forceful version of a declarative sentence. In other words, an exclamatory sentence makes a statement just like a declarative sentence, but it also conveys excitement or emotion. Okay, definition of exclamatory sentence: a sentence that expresses a strong emotion and ends with an exclamation mark. Example: I'm free. It expresses joy. I treasure you expresses love. She actually won expresses surprise. You're late again expresses anger. Okay, so all these sentences you can see end with an exclamation mark, and they have a sudden feeling, a sudden strong feeling in them. In the first sentence it expresses joy, second one love, third one surprise, and fourth one anger. Okay, the last kind of sentence that we will study about is imperative sentence. So what is an imperative sentence? A sentence that expresses a command, a request, an advice, or a desire is called an imperative sentence. Okay, for example, keep quiet. It is a command. Please bring a glass of water for me. It is a request. You must exercise every day to keep fit. This is an advice. I wish I would go abroad. This is a desire. Okay, so what are imperative sentences? Sentences which express a command, a request, an advice, or a desire are called imperative sentences. Okay. The next thing that we will study, children, is subject and predicate. So what is a subject? A subject is the person or thing that is doing an action, or the person or thing that is the focus of the sentence. Okay, जो person या thing action कर रहा है sentence में, या फिर कोई person और thing जो focus है sentence का, जो main है sentence का, ठीक है, वो होता है subject. ठीक है, subject मतलब होता है कर्ता, जो काम कर रहा होता है sentence में. By whoever the verb is performed is the subject. Then what is a predicate? A predicate of the sentence is the part that contains the action. Sentence का वो part जिसमें action हो उसे कहते हैं हम लोग predicate. ठीक है, verb जहाँ से sentence का start होता है वो वाला पोर्शन होता है प्रेडिकेट. तो हमने क्या पढ़ा? सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस का कर्ता होता है वो सब्जेक्ट होता है, एंड जो सेंटेंस में काम हो रहा होता है वो वाला पार्ट सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है. ठीक है, सब्जेक्ट इज द person or thing doing the action and predicate is the part that contains the action. What is the difference between subject and predicate? Subject होता है सेंटेंस का who और whom, ठीक है, और predicate होता है जो एक्शन हुआ होता है सेंटेंस में वो वाला पार्ट. ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा वाला पार्ट होता है? जिसमें सेंटेंस किस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो किसने किया है ये पता चले, वो वाला पार्ट होता है सब्जेक्ट. और क्या काम हो रहा है वो वाला पार्ट जिसमें पता चले वो होता है प्रेडिकेट. आई होप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का बेसिक आपको समझ में आया होगा. अब जो हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे उस पर हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डिटेल्स पता चलेंगी. ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है.
ठीक है. सो कंप्लीट सेंटेंसेस नीड अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. जो कंप्लीट सेंटेंसेस होती हैं उनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होना चाहिए. या तो सब्जेक्ट से या तो प्रेडिकेट से काम नहीं चलता है, सेंटेंस नहीं फॉर्म होता है. इट शुड कंटेन बोथ. Okay, so what does a subject do? It tells who or what the sentence is about. Sentence किसके बारे में या किस चीज़ के बारे में है वो बताता है. कौन सा पार्ट? सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट क्या होता है? Tells what the subject does or is. सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या है, ये वाला पार्ट हमें किस में पता चलता है? प्रेडिकेट में. Okay, for example, see the sentences that are given below. Mr. Parks is our principal. किसके बारे में बात कर रहे हैं? Whom are we talking about? It is Mr. Parks. So Mr. Parks is the subject. Is our principal. क्या है Mr. Park? What is Mr. Park? He is the principal. So is our principal is the predicate. Is verb होता है, ठीक है. So जहाँ से सेंटेंस का verb शुरू होता है वहाँ से प्रेडिकेट होता है सेंटेंस का. ओके, कभी भी वर्ब सब्जेक्ट में नहीं आता. इट ऑलवेज कम्स इन द प्रेडिकेट. जहाँ से वर्ब वहाँ से प्रेडिकेट. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंसेस. मैक्स एंड बेन आर इन थर्ड ग्रेड. सो किसके बारे में बात हो रही? हु? मैक्स एंड बेन. सो दे आर द सब्जेक्ट. दैट मच इज द सब्जेक्ट. आर इन थर्ड ग्रेड. नाउ व्हाट इज द वर्ब हियर? आर. ठीक है, सो आर इन थर्ड ग्रेड. ठीक है, ये मैक्स एंड बेन के बारे में बता रहा है कि मैक्स एंड बेन किस क्लास में है. व्हाट आर दे आर स्टूडेंट्स, दे आर इन थर्ड ग्रेड. ठीक है, सो इट टेल्स अबाउट मैक्स एंड बेन, सो इट इज द प्रेडिकेट. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द वेट्रेस ड्रॉप्ड द ट्रे ऑफ फूड. इसमें किसके बारे में बात हो रही? द वेट्रेस. सो इट इज द सब्जेक्ट. ड्रॉप्ड द ट्रे ऑफ फूड. इसमें वर्ब क्या है? ड्रॉप्ड. ड्रॉप्ड मतलब गिरा देना. ठीक है, सो गिरा देना वर्ब है यहाँ पे, ड्रॉप्ड वर्ब है यहाँ पे. ओके, सो ड्रॉप्ड द ट्रे ऑफ फूड इज द predicate of the sentence. Then children, the dogs in our neighbor's yard barked all night. ठीक है, whom are we talking about? The dogs. The dogs कहाँ के dogs? In our neighbor's yard. मैंने क्या कहा? Predicate हमेशा verb से शुरू होता है. ठीक है, तो इस sentence में verb क्या है? Barked. ठीक है, तो the dogs in our neighbor's yard is the subject and barked all night is the predicate. The next example is Ali and I studied for our science test. Now whom are we talking about in the sentence? Ali and I. ठीक है, तो ये subject है और verb क्या है? Studied. ठीक है, so studied for our science test, verb से लेकर आगे तक is the predicate. The next is he called his parents after the movie. किसके बारे में बात हो रही? He. Okay, so he is the subject. And what is the verb? Called. ठीक है, तो called his parents after the movie. उसने क्या किया? He called his parents after the movie. That is the predicate. The next sentence is all of the kids in the gym laughed. Whom are we talking about in this sentence? किसके बारे में बात हो रही है? All of the kids in the gym. ठीक है, and what did they do? They laughed. तो verb क्या है? Laughed. लेकिन laughed के बाद sentence खत्म है. So only laughed is the predicate and the rest is the subject. That is, all of the kids in the gym is the subject and laughed is the predicate. Now children, जितना portion in examples में blue में लिखा है that is the subject और जितना portion red में लिखा है that is the predicate. I hope you all have understood. You can see more examples from your book. Okay, as we will do the exercises, you will understand it more. Thank you students for watching the video. Take care of yourselves and stay home, stay safe.